પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી આવશે ગુજરાત પ્રવાસે। 20 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગરમાં પીએમનો કાર્યક્રમ। અલંગ શિપ બ્રેકિંગના કાર્યક્રમમાં તેઓ હાજરી આપશે। ₹100 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે। પ્રધાનમંત્રીનો ભાવનગરમાં યોજાશે રોડ શો। એરપોર્ટથી જવાહર મેદાન સુધી યોજાશે રોડ શો। રોડ શો સંદર્ભે શરૂ કરાઈ તડામાર તૈયારીઓ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मोडी रात्रे गुजरात आवशे। 14 सप्टेम्बर विविध कार्यक्रमों में हाजरी आपशे। गांधीनगर खाते अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हाजरी आपशे। अमदावाद में सरदार धाम खाते संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहेशे। नारणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सનું उद्घाटन करशे। अमदावाद सर्किट हाउस खाते मनपाना प्रश्नों निराकरण माटे समीक्षा बैठक योजाशे। राहुल गांधीना गुजरात प्रवास अंगे भाजपना प्रवक्ता ऋत्विज पटेले प्रतिक्रिया आपी। कांग्रेसना प्रशिक्षण शिबिरमां अपेक्षित कार्यकरो पण नथी हाजरी आपता। कांग्रेस कार्यकरो पण गैरहाजर रह्या छे। कांग्रेस पोते ज एक सड़ेली केरी छे। कांग्रेसनी एक केरी तो बतावो के जेनी पर प्रजा विश्वास करी शके। घणा जवाबदार लोको त्यां गैरहाजर रह्या छे पण जाणवामां आव्युं छे। बीजू एमणे बात करी कि सड़ेली केरी बधी ज केरीओने सड़ावी दे, तो कांग्रेस पोते ज एक सड़ेली केरी छे। कांग्रेसमां एक केरी तो मने बतावो कि जे सारी होय के जेना उपर विश्वास प्रजा करी शके, जेना नेतृत्व उपर प्रजा विश्वास करी शके अने एमनी विचारधाराने स्वीकारी शके एवुं कोईपण व्यक्ति, कार्यकर्ता, नेता कांग्रेसमां नथी। એટલે જ્યારે કોંગ્રેસ જ સંપૂર્ણ સડેલી કેરી હોય ત્યારે એમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે જે વાત કરી છે એ બિલકુલ બેબુનિયાદ છે અને તથ્યહીન વાત છે। લાફાકાંડ કેસમાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા નર્મદાની ડેઢિયાપાડા કોર્ટ લાવવામાં આવ્યા। ચૈતર વસાવા પોલીસ જાપ્તા હેઠળ ડેઢિયાપાડા લાવવામાં આવ્યા, જ્યાં કોર્ટમાં આજે केस कमिट थता मुख्य आरोपी कोर्ट में हाजर कराया। मुख्य आरोपी चैतर वसावा होवाथी तेओने हाजर रखाया। समग्र केस राजपीपड़ा में एडिशनल सेशन्स कोर्ट में चालशे। समाचार जूनागढ़ थी। कांग्रेसना नेता राहुल गांधी फरी गुजरात आवशे। 18 तारीखे फरी राहुल गांधी गुजरात आवशे। प्रशिक्षण शिबिरना समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी उपस्थित रहेशे। पाल आंबलियाए निवेदन आप्युं छे। 3 कलाकना सेशन पछी કેટલાક प्रश्नों हजू अधूरा है, जेना जवाब तेओ 18મીએ आपशे। राहुल गांधीए मानवता, आध्यात्मिकता, जुजुत्सु सहितना बाबतो अंगे विमर्श कर्यो। राहुल जी आज प्रश्नों छोड़ीने गया है ए आज मुद्दाओने लई अने एणे एवुं कह्युं छे के हूँ 18મીએ पाछो आऊं त्यारे आज प्रश्नों जवाब तमे शोधी राखो। संगठन सर्जन पछी गुजरात में कांग्रेसनी विजिबिलिटी वधी है। ठेर ठेर आप जोशो कि प्रोटेस्ट जनताना मुद्दे लड़ाईओ लड़वानुं प्रमाण पण वध्युं छे। जिल्ला कक्षाए आखी जनताना अधिकारोने कार्यक्रमों थई रह्या छे। बीजी बाजू खेडूत अधिकार यात्रा पण शरू थई गई छे। बनासकांठामां पूरे भीषण ताराजी सर्जी छे। भारे खाना खराबी वच्चे बनासकांठाना सांसदनी गैरहाजरी जोवा मळी हती। भाजपना नेताओए पण आक्षेप कर्या हता, जे बाद बनासकांठाना कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकोरे 6 દિવસ बाद पूरग्रस्त विस्तारोनी मुलाकाते पहोंच्या। प्रशिक्षण शिबिर मूकी पोताना मत विस्तारमां पूરની समीक्षा करवा पहोंच्या हता गेनीबेन। वावना मोरीखा गामे हजू पण पाणीनुं साम्राज्य जोवा मळ्युं, ज्यां भराયેલા पाणीमां सांसद गेनीबेन ठाकोर उतर्या हता અને લોકોની વ્યથા જાણી। સમર્થકો સાથે પૂરગ્રસ્ત મોરીખા ગામની गेनीबेने मुलाकात લીધી। ભરાયેલા પાણી વચ્ચેથી પસાર થતા નજરે પડ્યા सांसद गेनीबेन ठाकोर। अंबाजी दांता वच्चे त्रिशूलिया घाट में गमख्वार अकस्मात सर्जायो। एक साथे 4 वाहनों અથડાયા। त्रिशूलिया घाट में एक साथे 4 वाहनों ऊंधा पड्या। ट्रकना एक क्लीनरનું मौत थयुं। ड्राइवरने रिफर करायो। पोलीस वान में कोई पोलीसकर्मी ने ईजा नहीं पहोंची। आ बंने ट्रको अंबाजीथी पालनपुर तरफ जई रह्या हता। पोलीसनी 2 जीपो अकस्मातनी तपास करवा माटे घटना स्थळे पहोंची हती। ते समयે अन्य ट्रक द्वारा जोरदार टक्कर मारता बंने पोलीसनी जीप फंगोळाईने ग्राउंड में पड़ी हती। अंबाजी पुलिस ने 112 जनरक्षक वाहन पण खाड़ा में फंगोड़ायो। 2 पुलिस गाड़ियां डैमेज हुआ है और वो दोनों ट्रक्स और 2 गाड़ियां रिकवरी के लिए प्रोसीजर चालू है। हमारा टीम एसडीएम, मैं एसडीएम हूँ और मेरा मामलतदार और दोनों पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल्स और एसआई पीए सब लोग यहाँ हाजिर है। और इसी के लिए त्रिशूलिया घाट में अभी 1 महीने के पहले ही वो मेला की वजह से पूरा हमने
आरएनबी के द्वारा काम करवाया था, फिर भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। પોલીસમાં કર્મીઓમાં કોઈ ઇન્જર્ડ થયેલું નથી, પરંતુ પેલામાં ટ્રકમાં એક વ્યક્તિનું મોત થઈ છે, અને ત્રણ ઘાયલ છે હાલ. અને એને બધું તપાસ એ વધુ તપાસ થશે સિવિલ હોસ્પિટલમાં. છોટાઉદેપુરમાં મધ્યપ્રદેશને જોડતા નેશનલ હાઈવે 56 ઉપરના 3 પુલ ઉપર વાહન વ્યવહાર બંધ કરાયો. ઓરસંગ પુલ, સુવાલ પુલ અને ફેરખુઆ પુલ ઉપર 13 સપ્ટેમ્બર સુધી વાહન વ્યવહાર બંધ રહેશે. પુલોની ચકાસણી પ્રક્રિયાને લઈ કલેક્ટરે ડાયવર્ઝન અંગે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું. છોટાઉદેપુર અલીરાજપુર જતા આવતા ભારે વાહનો વાયા કવાંટ થઈને જઈ શકશે, જ્યારે 4 વ્હીલ વાહનો વાયા વનાર, અંત્રોલી, દેવહાટ, ફેરખુઆ થઈને અવરજવર કરી શકશે. 60 વર્ષ કરતાં જૂના પુલ હોવાથી સલામતી અર્થે ચકાસણી કરવામાં આવશે. ઓરસંગ બ્રિજ ઉપર તંત્ર દ્વારા ચકાસણી કરાઈ. આ તરફ સાંસદે જાહેરનામાનું પાલન કર્યું. સાંસદ જશુભાઈ રાઠવાએ ચાલીને આ બ્રિજ પસાર કર્યો. બ્રિજની ચકાસણીને લઈ વાહનો માટે આ બ્રિજ બંધ કરાયો છે. રંગપુર નાકા બ્રિજ બંધ હોવાથી સામેપાર સુરખેડા ગામ પંચાયત ઘરના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં સાંસદ પદયાત્રા કરીને ગયા. સાંસદ જશુભાઈ સાથે નારણ રાઠવા, મુકેશ પટેલ સહિત આગેવાનો અને અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.